जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण। श्री वैष्णव भगवत वृंद को लागी यो पवित्र स्तोत्र नित्य पाठ हेतु आलवंदर स्तोत्र रत्नम। अथ श्री आलवंदरा स्तोत्रम्। स्वादयन्निह सर्वेषां त्रयन्तार्थं सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनाह्वयम्। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्ट ज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्व ज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसिम्ने नाथाय नाथमुनये त्रपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्व ज्ञानामृताब्धिपरिवाहसुवैर्वचोभिः लोकेऽवतीर्ण परमार्थ समग्र भक्ति योगाय नाथ मुनये यमिनां वराय। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वरत स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदार सन्दर्शयन्निरमिमितपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरसु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथ सकलसमेति स्तोष्यामि न कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणो शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्धैः कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। यद्वाश्रमावधीयथामतिवाप्यसक्त स्तौमेवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवन्तः को मज्जतोरणकुलाचलयोर्विशेषः किञ्चैष्य शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्य स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण। तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धे रीत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्ष्यसे यदि ततो भुवनान्यमुनि नालं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः। एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तो
स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवस्वलत्वं स्वाभाविकानवधिकातिशयेसि त्रित्वं नारायण त्वविनमृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिव शतमख परमस्मरवाडी ते पियस्य महिमानबविपृशस्ते कः श्री श्रिय परमस्वत्वसमाश्रय कः पुण्डरीकनयन पुरुषोत्तम कः कस्यायुतयुतशतैककलां सकांसे विश्वं विचित्रचिदचित् प्रविभागवृत्तं वेदापहार गुरुपातकदैत्यपीडा ध्यापद्विमोचन महिष्टफलप्रदानै कोऽन्यप्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोधृतेन कस्योदरे हरविरिञ्चि मुख प्रपञ्च को रक्ष्यति मम जनिष्ठचकस्य नाभे क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्य कः केन चैष्य परवानिति शक्यशङ्ख त्वां शीलरूपचरिते परमा प्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतया प्रभवन्ति बुद्धुम् उल्लङ्घ्रिता त्रिविधसीमसमातिशायि सम्भावनं तव परिव्रणिमस्वभावं मायाबलेन भवतापि निगृह्यमानम् पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावा यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणः प्रधानं पुरुष परं पदम् परात् परं ब्रह्म च ते विभूतय वासीवदान्यो गुणवान् ऋजुःशुचिर् मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृतिकृतज्ञ त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधि उपर्युपर्याब्ज भुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थिता नोऽध्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थिति प्रणाश संसार विमोचनादय भवन्ति लीला विदय वैदिका स्वदीय गंभीर मनोनुसारिण नमो नमो वाङ् मनसाति भूमये नमो नमो वाङ् मनसैक भूमये नमो नमोऽनन्त महाविभूतये नमो नमोऽनन्तदैक सिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वाचरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिशरण्य त्वात्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदास्ति लोके सहस्रशोऽयन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्त भवाण्वन्त
चिराय मे कुलमिवासि लब्ध त्वयापि लब्धं भगवान्निदाने मनुतमं पात्रमिदं दयाया अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखम् किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूप निराशकस्यापि न तावदुत्सहे महे सहातुं तव पादपङ्कजं रुषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयो न जातु मातुः शरणौ जिहासति तवामृतस्यान्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेच्छुरकं हि वीक्ष्यते त्वादङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत् कृतोञ्जलि तदैव मुष्णाद्यशुभान्यशेषत शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्ण संसारदवासु सुक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिं प्रयच्छति त्वाचरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृतसिन्धुशिखर पीलासविक्रान्तपरावरालयम् नमस्यदार्ति क्षपणे कृतक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रम त्वचरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मिताततिशि सुनसमालच्छविं निमग्ननाभिं तनुमद्यमुल्लस विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणं चकासतं ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतं सोत्पलकर्णभूषण श्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला लकावलीबन्धुरकम्बुकन्दरं मुखश्रियान्याकृतपूर्णनिर्मला मृतां सुबिम्बां पुरुहोज्ज्वलश्रियं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलगण्डमुण्डं ललाटपर्यन्तविलम्बितालकं स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्वरैर् लसत्तुलस्या वनमालयोज्ज्वलं चकर्थयस्या भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभू जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थमम्बोधिरमन्त्यबन्धि च स्ववैश्यरूपेण सदानुभूतया
पूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितै सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानबलैकधामनि फणामणिव्रातमयूखमण्डल प्रकाशमानोदरदिव्यधामनि निवासशय्यासनपादुकां सुको पधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैर्यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः दाससखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमय उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वादङ्घ्रिसम्मर्दकिडाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तो जितशेषभोजिना त्वया नृशिष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिना तथानुजानन्तमुदारवीक्षणै हताखिलक्लेशमलै स्वभावतः सदानुकूल्यैकरसैस्तवोचिते गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैर्निसेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भर प्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षीणाक्षुणक्षिप्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवन स्वभावलावण्यमयामृतो दधिं श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापसखमर्थिकल्पकम् भवन्त्यमेवानुचरन् निरन्तरम् प्रशान्तनिशेषमनोरथान्तरा कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करा प्रहर्षयिष्यामि स नाथ जीविता धिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलज्जम् परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्ये विधिशिवसनकाधेर्ध्यातुमन्त्यन्तदूरम् तव परिजनभावं कामये कामवृत्त अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनान्दधिं मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणि भगवन् भवदुर्दिने पथ स्खलितं मामवलोकयाच्युत नमिषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रत यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् च विधिनिर्मितमेतदन्वयं भगवान् पालय मास्मजिहप वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानि यथा तथाविध तदयं तव पादपद्मयो
रहमदैव मया समर्पिता मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धितवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धि रथवा किं नु समर्पयामि ते अवबोधितवानिमां यथा मयि नित्यं भवति यतां स्वयं कृपयैवमनन्यभोग्यतां भगवान् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनां भवनेष्वपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मा स्म भूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकार विलोकनाशया त्रीणीकृतान्नुत्तम भुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुस्सह न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषा विलसितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहेयातु सतदा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम् दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो निहीनाचारोऽहं नृपसुरशुभस्यास्पदमपि दया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्य जलधे तव स्मारं स्मारं गुणगणमितीच्छामि गतवे अनिच्छन्नपेवं यति पुनरितीच्छन्निवरज तमश्छन्नच्छद्मस्तुतिवचनभङ्गिमरचयम् तथापीत्थं रूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मन पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसिगतिश्चासि जगताम् त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहम् प्रपन्नश्चैवं सद्यहमपि तवैवास्मि भरा जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदां निसर्गादेव त्वचरणकमलैकान्तमनसाम् अधोधपापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादाक्षुद्र चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वञ्चनपरा निशंसपापिष्ठ कथममितो दुःखजलधे अपारादुतीर्णस्तव परिचरेयं चरणयो रघुवर यदस्भुस्त्वं
तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्च चैध्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराधुर्मुक्तसायुज्यदोभू वद किम पदमागस्तस्य तेस्ति क्षमाया ननु प्रपन्न सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमान तवानुकम्प्य स्मरतात् प्रतिज्ञां मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते अकृतिमत्वा चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पीतामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीदमद्भृतमचिन्तयित्वा अकृतिमत्वा चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पीतामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीदमद्भृतमचिन्तयित्वा यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं। श्री आलबंदर स्तोत्रम समाप्तम। जय श्रीमन्नारायण।